Hi everyone, my name is Bradul and welcome back to my channel. I'm starting today's vlog at the most random time. It is exactly 10:30 p.m. right now, and tomorrow at this time exactly I'm going to be leaving for the airport to go to London with a global beauty brand. I am obviously so excited, but I feel very much at peace because I feel like I have been waiting कि मेरा time कब आएगा. I've just kept my head down all of these years and tried to make really good quality content that I am proud of, and I think it's finally paid off after 10 years, and I'm just so grateful and so blessed for this opportunity. I'm excited. Packing करनी बाकी है. We'll talk a little bit more about what's about to happen. It's my first time going with this brand. They do a lot of these kinds of fam trips in the past and they look insane, so I can't wait to experience it. मेरे bucket list में था ये brand के साथ एक trip पे जाना, and देखते हैं क्या होता है. Obviously वो भी मैं vlog करूँगी, but आज हमारे पास 24 hours है सब कुछ पैकअप करने के लिए. So as you can tell, मैंने start तो कर ही दिया है packing, and I think I'm like 50% done. Yesterday night, my stylist Tanya had come over and we tried on a bunch of different outfits and we finalized 5 looks. There are a total of 6 looks that I need to do in 4 days. So mostly मेरा सब sorted है. एक look मैं खुद कर रही हूँ, which I need to try out today because I haven't tried it out. I am carrying 3 suitcases, as you can tell. The brand is flying me business class, so I'm making the most of it. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बैग में मेरे सारे outfits हो जाएंगे, like all the heavy brand outfits, and then इसमें I can do other things like toiletries, night dress, and basically थोड़ा सा ये खाली ही रहेगा. And वो वाले में मैं snacks add करूँगी. एंड मोस्टली मेरे ये दोनों सूटकेस तो खाली ही रहने वाले, एंड मैं जानबूझ के खाली लेके जा रही हूँ बिकॉज from the past videos that I've seen, I know that this brand is very generous in terms of like what they give back. So I want to have like space to bring things back, and also I do intend on shopping in London. I don't know if I'm gonna have the time honestly, but I'm going with a lot of space. So last year when I went to Switzerland, that was my first ever brand trip, international brand trip, and मुझे काफी कुछ वहाँ पे like समझ में आया, सीखने मिला कि कैसे क्या करना है. So I feel well equipped for this trip. There are 4 people going from India for this trip, and I know just one person. Not very well, but I've met her quite a few times and she seems lovely, so I'm excited to like catch up with her this trip. बट मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि जब मैं स्विट्जरलैंड गई थी मुझे ऑनेस्टली तब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट इंडिया फैशन के मामले में, बिकॉज बहुत ही गिने चुने इवेंट्स थे वहां पे. इट वॉज अ वेरी रिलेटिवली शॉर्टर ट्रिप एज कम्पेयर टू दिस वन. So this time around I have made sure to at least have one outfit that represents India. Let's just say that. I don't want to give like too much away. So मेरे पास already Shenzhen visa है, 2 या 3 साल का है मेरे पास ऑलरेडी. बट यूके के लिए यू नीड अ सेपरेट वीजा, विच इज एक्चुअली व्हाई आई केम बैक अर्ली फ्रॉम आवर पेरिस ट्रिप. We cut it short. We were supposed to go to Nice. We were supposed to go to a few other places in south of France. Let's just say that. And we cut it short because वरना मेरा वीजा आता ही नहीं. एकदम प्रायोरिटी पे हमने वीजा निकाला and thank God आ गया. By the way, I am so lucky, like I cannot even begin to explain. मुझे मेरे periods आने वाले थे during this brand trip, which would have been very expected. If you guys know my history, you know मुझे periods आते हैं at the most inconvenient times. So I was mentally prepared कि ये होने वाला है इस बार भी, but मुझे periods जल्दी आ गए by like 4 days. Yeah, 3-4 days से मुझे जल्दी आ गए. And मुझे आज आए period, so the whole of today I've been lying on the bed, which is okay because I had gotten all of my work done, and आज का मैंने actually पूरा दिन रखा था packing करने के लिए, but I took a day off. The whole week I have been just shooting videos back to back, so that when I'm away everything's like aligned. But I'm so happy कि मेरे periods आ गए. अब my skin is gonna be clear hopefully. My bloating is gonna be less, relatively less. अभी भी है,
मैं दिखाती हूँ what my bloating is, but it's really bad before I get my period. Like अगर मुझे periods नहीं आए होते तो मुझे बहुत सारे outfits actually fit भी नहीं होते. Like मुझे अंदर वो shaper पहनना पड़ता. My bloating is like extreme. I picked up these boots from Myntra and इतने अच्छे quality के boots आए ये. I'm gonna be carrying these with me. I've never worn them, so I'm just putting them directly without covering them. By the way, my Swiggy order is here. So इसमें बहुत सारे snacks है, but these snacks are not for me. I'm taking all of these snacks for the team, just like a cute gesture. खाली हाथ नहीं जाना था मुझे, so I have stuff like आलू भुजिया, चकली, tapioca chips, भाकर वड़ी, चिक्की, stuff like that basically. I just think that they'll enjoy it. Cute लगेगा, मतलब ये थोड़ा सा इंडियन स्नैक्स, अलग अलग कंट्री के स्नैक्स सबको ट्राई करना अच्छा लगता है. एंड बाय द वे, नॉइस मुझे पैसा नहीं दे रहा है. आई जेन्युइनली लव नॉइस प्रोडक्ट्स. कितना क्यूट है उनका ब्रांडिंग, नंबर 1. नंबर 2, इट टेस्ट गुड. सो आई एम जस्ट पैकिंग ऑल ऑफ दिस. मैंने खुद के लिए भी थोड़े स्नैक्स पैक कर रही हूँ. सो मैंने मैगी ली है, ये वेजी कपा नूडल्स भी है. आई हैव सम डेट्स, decaf coffee and some chai. मुझे चाय की बहुत craving होती है for some reason when I'm traveling. And then I have these Ziploc bags which we'll need to pack our bag, the purse. क्योंकि Heathrow का मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले गई थी लंदन. But from what I remember last time around is that they're very strict about keeping your liquids in a separate transparent Ziploc bag. So I just ordered a Ziploc bag so that I can put all of my liquids in it. I think it's supposed to be a 20 by 20. This is definitely not 20 by 20, but I think it should be fine. By the way, if you're intrigued and if you want to know what brand I'm going with on this trip, you need to follow me on my Instagram, number 1. मेरे YouTube पे यहाँ पे 1 million subscribers हैं, Instagram पे उसके आधे भी नहीं हैं. मैं बहुत मेहनत करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, सो प्लीज़ मुझे जाके फॉलो करो इन केस यू डोंट ऑलरेडी. मैं वहाँ पे रिवील करने वाली हूँ कि वेयर आई एम गोइंग, विथ हुम आई एम गोइंग. वेयर आई एम गोइंग तो यू ऑलरेडी नो, विथ हुम आई एम गोइंग. बट मैंने ना एक हिंट रखा है ये वीडियो में, कहीं पे तो ये स्क्रीन में एक हिंट है. सो यू कैन पॉज दिस फ्रेम एंड हैव अ लुक फॉर योर सेल्फ एंड कॉमेंट डाउन बिलो योर गेसेस. आई सेड आई वुड शो यू माई ब्लोटिंग. सो this is what my stomach looks like. It actually doesn't look bad at all. Front angle से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. But usually it's like out. Like मैं ऐसी लगती हूँ कि मैं almost 3 months pregnant हूँ. So I'm glad कि मुझे periods आ गए only because of that. Because मेरे थोड़े 1-2 outfits इतने tight fitting हैं कि कल जब मैं try-ons कर रही थी वो zip बंद ही नहीं हो रही थी. Because obviously I was bloated, which is fine. And I'm okay with it otherwise. But I'm so happy my periods are done. I can be like more energetic. I have entered. I mean, by the time I reach London, I will be in my follicular phase, like start hone wala hoga. So I'm going to be so full of energy, so excited about life and not in pain. I'm going to have to cue the time lapse now because it's going to be a beauty event, like it's a beauty brand, makeup brand. So my makeup game needs to be strong. So मैं भी एकदम concentration से मेरा beauty bag भरने वाली हूँ. इतना ज़्यादा makeup लेके जाने वाली हूँ मैं. It's going to be fun. Good morning. It's a Sunday afternoon, 10 hours to go for me to leave. I am just doing my hair because since the last 2 nights I've been sleeping in such a bad bun and my hair is all teda meda. So I'm just fixing it because I want my hair to be presentable for the journey. And also मैं आज शूट कर रही हूँ. So I told you guys मैं full week शूट ही कर रही थी. बट हमें टाइम नहीं मिला टू शूट ऑर्गेनिक कॉन्टेंट फॉर मृदुला आदित्य का शॉर्ट्स एंड आई एम गोना बी गॉन फॉर अ कपल ऑफ डेज. सो हमारा एस्टिमेट है कि आई नीड टू शूट वी नीड टू शूट 10 शॉर्ट्स टुडे, which is manageable, but we'll need to be very efficient about it and we'll need to be quick. I think we should be able to pull it off because we have a very clear list of things that we need to shoot. And also
we have an amazing team that is so efficient and सारे preps करके ready रखे हैं. तो I think once we start, it will take us quite a few hours, but इसके लिए मैंने कल packing ख़त्म कर दी. By the way, ये tool, I love this tool. It's by Alan Truman. Obsessed with it. I think for this trip I've been quite organized, even though मुझे बहुत ही advance में नहीं पता था about this trip. I've already gotten my nails done. I have my hair ready only. Like मैंने अभी Paris के पहले मेरे hair कराए थे, so I don't need to do anything. I shaved my entire body this morning. So there's no major makeover that you're going to be seeing in today's video. See, cute, right? I think it looks so nice. And talking about makeovers, a brand that has gotten a summer makeover, an actual glow up, has to be Body Loving. If you don't know already, they basically went through a rebrand. They have a new look, a new feel, a new logo, a new tagline as well, which is called Play Some More, which is so apt for them. We also actually went to their launch party. We vlogged it and it was such a good time. Along with the rebrand, they've also dropped 16 new launches, which is just insane. And obviously, I have some favorites, so let me share them with you. So primarily, there are 4 new ranges: Boardroom in Bora Bora, Tropic of Discussion, Petal on the Rocks, and Matcha But Disco. And every range has a shower gel, a body lotion, and a mist. So it's like a proper routine. I think मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, but my favorite range is this one. It's called Boardroom in Bora Bora. So this starts off as a very fresh and fruity fragrance, but then it evolves throughout the day into this very comforting scent that lingers all day. The mist is so compact and so easy to carry around. इसका आधा shower gel तो मैंने खत्म कर दिया है because we've been using this every single day, and I'm not even kidding when I say this. When you actually pour it out, it looks like dragon fruit pulp. This does have dragon fruit extract that really brightens your skin. It has hyaluronic acid, which keeps your skin hydrated, and rice water that evens out your skin. The body lotion is again something that I reach out to all the time because of how lightweight it is, and it smells amazing. Obviously, let's not forget that. But it's amazing for the Mumbai weather. It's so hot and sticky. This absorbs into your skin immediately. एकदम lightweight है, but hydrate भी करता है. अगर मुझे एक और फेवरेट मेंशन करना है, आई थिंक इट हैज़ टू बी matcha but disco. I genuinely did not expect to like this. I do like matcha, but not necessarily the fragrance, but this smells incredible. It also has coconut, it has vanilla. It's very unique without trying so hard to be unique. Like एक बार इसको smell करो, बहुत ही unique fragrance है ये. The last 4 launches are these cute lip balms. So we have Banoffee for Brekkie, Papi Tiramisu, Popcorn and Pilates, and Gossiping Ginger Ale. The names match the fragrances so well. I think my favorite has to be these two. ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया क्योंकि आदित्य का है. He uses it every single day. But I really like the shade of Popcorn and Pilates. I'm actually wearing it even right now. बहुत ही pretty tint छोड़ते हैं ये. But other than that, they're very hydrating, very nourishing because it has peptides, ceramides, and hyaluronic acid. Oh, and all of them come with a cute charm with them. How cute! Body Loving never ceases to impress me. I think they've killed it with their new launch. All of their products not only look great visually, but they're such amazing products. You have to try them out for yourself. I'm going to leave a code right here, which is Mridul S10, so that you can get an additional 10% off. I'm eating my most favorite South Indian breakfast. Before I travel, I make sure to eat this. By the way, idli hai. It's like dunked in chutney and sambar. Double-sided tape is better than body tape. बहुत obviously हो. थोड़ा सा नीचे लगा. अभी चिपक गया. टॉप को नीचे. मृदुल बाल. ठीक है? Yes. Cool. देख एक बार वो ट्रायल कर. अभी थोड़ा ऐसे टेप दिख रहा है थोड़ा सा माइक के बाजू में. चल जाएगा. ओके इट इज़ 7 o'clock राइट नाउ. मेरा प्लान था कि 7 भी नहीं, एक्चुअली 8 हो गया है ना. इट्स 8 o'clock राइट नाउ. मेरा प्लान था इनिशियल
कि मुझे 6 o'clock तक सब कुछ ख़त्म करना है, बट वी वर एबल टू गेट डन विद आई बिलीव 8 शॉर्ट्स हमने शूट किए हैं एंड मुझे वीडियोस भी रिव्यू करने थे बिफोर आई लीव, सो हमने वो भी कर दिया है. I'm tired, but my packing is done. I am gonna go and chill at my mom and dad and Nana's home because she is actually really pissed at me because I was supposed to go for lunch और मैंने आज lunch खाया ही नहीं है. Thankfully मैंने वो breakfast जो खाया था उससे मेरा like पेट भरा हुआ था, but उसके बाद मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है. बट मुझे जेन्यूनली भूख नहीं लगी है, लाइक बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है. आई डोंट नो, मे बी आई वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड बाई एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड मी, बट आई एम ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड. लाइक जब मैं स्टूडियो पे होती हूँ रोज बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता है, बट मुझे भूख लगती है, मैं जाती हूँ घर पे खाना खाने के लिए, बट आज मुझे भूख ही नहीं थी एंड माई मॉम इज रियली एंग्री. सो लेट्स जस्ट गो होम एंड ईट सम गुड फूड, होम कुक्ड फूड एंड जस्ट चिल फॉर अ व्हाइल. आई एम होम. And look how cute is my outfit. ये मैंने पूरे दिन पहना था and it's so comfy. I'm definitely gonna be wearing this more in the summer. So this is dinner for me. पुलाव है, रायता है and magic masala on top of the raita makes everything 10 times better. Last mango till I come back. वैसे हाँ इतना कुछ नहीं है, बाय द टाइम आई कम बैक तभी भी मैंगो सीजन तो होगा ही. 5 दिन के लिए जा रहे हैं मैंगो सीजन रहने वाला है. तू आने का 15 दिन तक रहेगा. एकदम शुगर. ऐसा बीच में से खा के एक साइड तो रख देती. बहुत मीठा है. ये साल के मैंगोज हमें इतने अच्छे मिले हैं. इट्स फ्रॉम दिस वन कॉन्टैक्ट. आई कैन लिंक इट डाउन बिलो. एवरीवन whoever has tasted these mangoes has said that it's so good. Not sponsored. हम खुद पे करके ले रहे हैं मैंगोज, बट बहुत अच्छे हैं. बिकॉज एवरी ईयर वो जो पाउडर से पकाए हुए आम रहते हैं ना, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं, नेचुरली स्वीट है. आई हैव टू लीव इन 30 minutes एंड वी आर डूइंग दिस. बेसिकली ये स्टीम आयन हमने मंगाया है जेप्टो से एंड इट्स सो क्यूट एंड स्मॉल. एक बार साइज दिखा आदित्य. हाँ, तो वी आर जस्ट टेस्टिंग इट आउट और बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मुझे वहां जाके बहुत सारे आउटफिट स्टीम करने पड़ेंगे. 6 आउटफिट्स दिन पे ही करके रख देगी. यस यस. हैप्पी जर्नी. बाय. चलो बाय. ध्यान રાખજે ને બધા પાસપોર્ટ ને બધું અંદર હે. લે અમને તો કીધું ના I'm fine. Bye. Bye, baby. All the best. Take care of yourself. And enjoy. Bye. સ્ટ્રેસ નહીં લેતી અને મસ્ત થશે. ઓકે Okay. બ્લોગમાં આવશે પપ્પાના પગ નથી પડ્યા. Bye. પડું છું મને. डायलॉग रेडी था. Thank you. મળીએ. Bye. Need to leave in 15 minutes. Just removing my makeup and I'm gonna also take a quick shower because I don't know, I just like to take a shower and be like fully clean. 10 घंटे की फ्लाइट है, 9.5. नॉट टू बैड. बहुत लंबी भी जर्नी नहीं है. My plan is to sleep, honestly, not stay awake. Oh, and also the brand team has sent a car for me to like be picked up till the airport, which is so sweet. Like इतना detail, इतना ज़्यादा इन्होंने सोचा है ना. Very cute. I think I have everything that I need. Aditya is just making me a mini med kit. Usually he's the one who carries it. Obviously अभी मैं अकेले जा रही हूँ तो I need a med kit with me just in case. I hope I don't have to even open it. Quickly नहा लेती हूँ. I'll see you in a bit. I'm so proud of myself. Look at me. मैंने पूरा मेरा outfit निकाल के रखा है. What I'm supposed to wear. Bags are ready and I am also ready. It's time to go. And off she goes. So
we've boarded and we've taken off as well, and I'm sitting in my own cabin. I don't know if you guys can see that. I'm flying British Airways and this is the first time ever that I've experienced this in a business class. यूजली बिजनेस क्लास में 2-3 चीज़ें बहुत ही सिमिलर होती है, जैसे पूरा इंक्लाइन हो जाता है बेड, यू गेट अ प्रॉपर 3 कोर्स मील, यू गेट शैम्पेन, यू गेट एन एमिनिटीज किट. बट ये जो है, oh my god, I love it. Okay, so this is what the cabin looks like, just so that you can see what I'm seeing. And that's me. I've decided to skip dinner because 2 बजे मुझे नहीं खाना है खाना, और मैंने अच्छा खासा खाना खाया था घर पे. So मैं मेरा एपिसोड ख़त्म करूँगी स्प्लिट्सविला का and I'm gonna go to sleep probably. This is me literally 10 minutes after saying that I'm gonna sleep. मुझे नींद नहीं आ रही है, so I've decided to do not a what's in my bag, but मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ये एरिया को एक मेरा मिनी अपार्टमेंट बना दिया ऑलमोस्ट, विथ ऑल द थिंग्स दैट आई ऑलवेज कैरी. एंड आई डू दिस रिगार्डलेस कि मैं इकोनॉमी फ्लाई कर रही हूँ या बिजनेस या व्हाटएवर. सो these are 10 things that I cannot fly without. So the first thing has to be an eye mask. I need an eye mask no matter what to sleep. And flights में anyway सोना थोड़ा सा difficult होता है, no brainer है ये. Next, this balm from Thailand, or any kind of like thing that has menthol in it basically. Smells so good, and मुझे थोड़ा सा nausea, motion sickness टाइप है, तो ये बहुत यूज़फुल होता है. अ मिस्ट, ये वाला तो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है, बट इंस्टेड ऑफ लाइक रीअप्लाइंग स्टफ ऑन योर स्किन एंड टचिंग योर फेस, दिस इज़ गुड. इट लिटरली स्मेल्स लाइक अ स्पा, सो गुड. लिप ऑयल, कुछ भी, लिप बाम भी चलता है, बट दिस वन गिव्स लाइक अ वेरी प्रिटी शेड. नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ टूथब्रश जिसके अंदर ऑलरेडी टूथपेस्ट है. सो इन द मॉर्निंग जो लंबी फ्लाइट्स होती है उसके बाद सुबह ब्रश करने के लिए दिस इज़ सो यूज़फुल. यू जस्ट बाइट ऑन इट एंड देन यू ब्रश योर टीथ एंड यू फील फ्रेश. Honestly, I carry a lot of stuff, but this is like my top 10. Okay, then we have a necessity, Dettol wipes. Self-explanatory hai, I need these. Number 7 is a snack. Today I was craving chocolate, so I picked that up. It's always good to have snacks on you. Number 9 is any source of entertainment. So it can be a book. I'm loving this book. अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ये मैंने स्टार्ट की थी जब मैं पेरिस जा रही थी, and I'm really enjoying it so far. So if not a book, my iPad. I need my iPad with me. मुझे आदित्य ने बहुत साल पहले ये गिफ्ट किया था, बट अब तो मुझे ऑब्सेशन हो गया इससे. एंड द 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई कैन नॉट शो यू बिकॉज यू गाइज आर लीन्ड ऑन इट इज़ माई टम्बलर. यू कैन कैरी अ बॉटल ऑफ वाटर, बट वो बॉटल ऑफ वाटर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है. अ प्रॉपर टम्बलर सिपर गोज़ अ लॉन्ग वे. I know it's too much, it's very bulky to carry around, but it's so good. I just need hydration. Hydration when you're traveling is so important. और मुझे UTIs बहुत जल्दी हो जाते हैं, so I need that. निकल गई हूँ मैं एयरपोर्ट से, एंड मुझे इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है बिकॉज ये एग्जैक्ट सेम कार मुझे स्विट्ज़रलैंड के टाइम पे भी पिकअप करने आई थी. एंड
वही बोलना था, अपडेट देना था। मैं इसके बाद जैसे ही निकलूंगी कार से मैं डायरेक्ट होटल जाऊंगी, बीच में व्लॉग नहीं करूंगी बिकॉज मुझे मेरे बिलोंगिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है अबाउट लंदन। सो जैसे ही मैं अभी उतरूंगी, दूर है वैसे तो, अभी आई थिंक 30-40 मिनट्स लगने वाले हैं, बट जैसे ही मैं उतरूंगी मैं डायरेक्ट होटल जा रही हूँ एंड देन आई विल सी यू इन द रूम। Okay, so I have checked into my hotel and it is beautiful. You guys need to subscribe to this channel to see more. एक अलग से vlog आएगा about this entire London trip, and you guys need to go follow me on my Instagram because all the real time updates you're gonna be seeing there. So yeah, that's basically it. I really hope you guys enjoyed watching this very short vlog and a very random one. I had kind of stopped doing these random vlogs. I used to just have very structured vlogs. Like मैं plan करती थी कि ये हफ्ता मैं vlog करूँगी, but मुझे बहुत ही impromptu मन हुआ to vlog like 24 hours in my life. So I hope you guys enjoyed watching. Subscribe to my channel and like this video. I'll see you very soon in my next one. Bye.